Rahman. My topic today is ocular ischemic syndrome. Where learning objectives today are to become familiar with the ocular manifestations of OIS, to gain familiarity with the systemic manifestations of ocular ischemic syndrome. We will be able to understand that ocular manifestations of OIS may be the first presenting sign of a potentially life-threatening underlying condition. We will be able to understand the pathophysiology of OIS so that we become familiar with the role in diagnosis and management of OIS in liaison with medical specialists. What do you know about ocular ischemic syndrome? क्या होता है? Ischemic condition of the eye that affects cause the hypoperfusion leading to clotted artery stenosis. बिल्कुल ठीक. So OIS is ocular hypoperfusion caused by ipsilateral carotid artery obstruction. It is a rare but vision-threatening condition. Greater than 90% carotid artery stenosis is already there at presentation, and it is usually unilateral in 80% of cases. 20% cases may be bilateral. Incidence is 7.5 per million. Now, pathophysiology. OIS is usually caused by severe occlusion of carotid arteries. उसकी main reason जो है वो atherosclerosis है. We all know ophthalmic artery is a branch of internal carotid artery. Ophthalmic artery further branch करती है into central retinal artery, short and long posterior ciliary arteries and anterior ciliary arteries. तो जब internal carotid artery का stenosis होगा, this reduces perfusion pressure within the central retinal artery that leads to OIS. एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा और काजेज भी हैं जैसे सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस, जाइंट सेल आर्टराइटिस, ट्रॉमा एंड इन्फ्लेमेशन. ये सब रेयर कॉजेज हैं. Because it is a manifestation of a systemic condition, it is imperative to enlist a cardiologist, vascular surgeon, and a neurologist in caring for these patients. So this is a diagrammatic illustration of arterial supply of the orbit. We can see that ophthalmic artery arises from internal carotid artery and further branches to posterior ciliary arteries and central retinal artery. Systemic associations. It is associated with diabetes mellitus, hypertension. About half of the patients have ischemic cardiovascular disease. 1 by 4 already have a previous history of CVA. Stroke rate is higher than general population in OIS. Risk factors. So what are the risk factors for OIS? Tension और जेंडर में कौन सी ज़्यादा होगी? मेल, smoking, hyperlipidemia. So these are the risk factors. As we have already discussed, majority of cases are due to atherosclerosis. So risk factors are male gender, old age, smoking, hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus. What are the symptoms of ocular ischemic syndrome? Vision may be transient or gradual or sudden. Do you know about light-induced amaurosis, fugax? लाइट एक्सपोजर होता है उसके बाद थोड़ी देर के ट्रांसमिट की विजुअल ब्लरिंग हो जाती है. ठीक है, ठीक है. So symptoms are gradual loss of vision over weeks or months mostly. It can also be sudden. 10% exhibit amaurosis fugax, that is transient loss of vision. Transient loss may also occur with exposure to bright light. This is known as light-induced amaurosis. 40% present with periorbital pain, which is often as dull ache and is known as ocular angina. Signs. What are the signs in case of ocular ischemic syndrome? पहले एंटीरियर सेगमेंट क्या कर लें आप? ठीक है.
ठीक है, Rubeosis irides cells भी हो सकते हैं, फ्लेयर इज मोर प्रेडोमिनेंट। ठीक है, ठीक है। So anterior segment findings are diffuse episcleral injection and corneal edema, aqueous flare with few cells, iris atrophy with the mid-dilated poorly reacting pupil, rubeosis iridis in up to 90%, neovascular glaucoma, IOP may be high or it may also be low due to ciliary body hypoperfusion. So this is a colored anterior segment photograph showing how will you describe that? एपिस्क्लेरल नहीं है, ये आयरस ही है सर जी। रूबियोसिस आयराइडस है और मिड डायलेटेड प्यूपिल है और एक्ट्रोपियन यूवी है, ठीक है, और कैटरेक्ट भी है। सो दिस इज अ गोनियोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ रूबियोसिस आयराइडस, एंगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल। Signs, what are the posterior segment signs? So where are these features more prevalent? Mid periphery. ठीक है. So this is in contrast to CRVO or diabetic retinopathy where findings are more in posterior pole. So narrowing of retinal arterioles, retinal veins are dilated but not tortuous in contrast to CRVO. Retinal hemorrhages and microaneurysms commonly are in mid periphery. Cotton wool spots may be there, NVDs, NVEs, and spontaneous retinal arterial pulsations may be present. And again, can you describe that? Which eye is this? Right eye. And what findings can you see here? What are the positive findings here? In which region? In mid peripheral region. Okay. And this is the fundus fluorescein angiogram showing blocked hyperfluorescence due to hemorrhages and hyperfluorescent spots due to microaneurysms, mostly in mid peripheral region. Again, this is a colored fundus photograph. This picture shows disc new vessels and FFA shows hyperfluorescence due to new vascularization. What are the differential diagnosis of what is? ठीक है, ठीक है। आरओपी में तो फिर वो हिस्ट्री होगी बच्चों में, हाँ it's an old age disease mostly above in 50 years. Okay, so most common are CRVO and diabetic retinopathy. Hypertensive retinopathy can also be there. So these are some differentiating features. So it is 80% unilateral, whereas CRVO is usually unilateral. Diabetic retinopathy is mostly bilateral. Age is 50 to 80 years in OIS and CRVO, whereas variable in diabetic retinopathy. Veins are dilated, non-tortuous in OIS, dilated and tortuous in CRVO, whereas dilated and beaded in diabetic retinopathy. Optic disc is usually normal in OIS and diabetic retinopathy, whereas it can be swollen in CRVO. Retinal artery perfusion pressure is decreased in OIS, whereas normal in CRVO and diabetic retinopathy. Retinal hemorrhages are mild in OIS, whereas they can be mild to moderate in diabetic retinopathy and mild to severe in CRVO. Microaneurysms are at mid periphery in OIS, whereas usually they are at posterior pole in CRVO and diabetic retinopathy. Heart exudates are mostly only in diabetic retinopathy. They can also be present if there is coexistent diabetes in other conditions. On fluorescein angiography, choroidal filling is delayed and patchy. This is the most important FFA clue, whereas it is normal in CRVO and diabetic retinopathy.
Arteriovenous transit time is prolonged both in OIS and CRVO, whereas it is normal in diabetic retinopathy. Retinal vessel staining, prominent arterial staining in OIS, whereas in case of CRVO, there is prominent venous staining, and there is no vessel wall staining usually in diabetic retinopathy. What investigations, what other investigations we will do? ठीक है. So ocular most important investigation is FFA. It helps to confirm the diagnosis. It shows delayed and patchy choroidal filling, increased retinal arteriovenous transit time, retinal capillary non-perfusion, retinal vessel wall staining, late leakage from arterioles and veins, and macular edema. So this fundus fluorescein angiogram picture shows patchy choroidal filling. We can see that choroid is filled in patches. And it is a delayed patchy choroidal filling. It is in 60% of patients with OIS. Again, this is another fluorescein angiogram picture showing different phases at different time frame. Usually first pass of fluorescein is complete by 30 seconds. Choroid phase between 9 to 15 seconds. Then after 1 second, arterial phase starts. Then arteriovenous and then venous phase. So whole circulation completes in 25 to 30 seconds. However, in ocular ischemic syndrome, there is delay in both choroidal filling and arteriovenous transient time. We can see that there is patchy choroidal filling. Arteries have started to fill at 24 seconds. There is still no significant pass of dye in veins. We can see that at 49 seconds, veins are also starting to fill now. Indocyanine green angiography. It allows for better evaluation of choroidal vascular abnormalities. In this, arm to choroid circulation time is increased, which is the time from the injection of dye to the first appearance of dye in choroidal circulation. Usually it is 10 seconds, here it is increased. Also, intrachoroidal circulation time is increased, that is time from first appearance of dye in choroidal circulation to complete filling of choroidal veins. It is usually 5 to 6 seconds, here it is also prolonged. Systemic investigations, what systemic investigations we will do? Most important are carotid Doppler and MRA or CTA for carotid stenosis. And we will also do other systemic investigations for cardiovascular risk factors. Management is multi-speciality and with combined role of ophthalmologist, physician, neurologist, and vascular surgeon. Ocular treatment. So how will we treat ocular features? How will we treat anterior segment inflammation? What steroids? At which route? Topical steroids. साइक्लोप्लेजिक्स भी दे सकते हैं हम, ठीक है. And about neovascular glaucoma, except for both medical and surgical therapy depending on visual potential as well, ठीक है. तो अगर मेडिकल थेरेपी फेल होती है तो हम सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है. इफ देयर इज नो विजुअल पोटेंशियल विल आल्सो गो टू डायोड लेजर साइक्लोएब्लेशन. If painful blind eye, there are also other options like retrobulbar alcohol. How will we treat proliferative retinopathy? PRP. We can also do intravitreal anti-VEGF. And if there is macular edema, anti-VEGF or intravitreal steroids. Okay. So this is a picture showing, first picture shows iris neovascularization and mid-dilated pupil, whereas in the second picture there is regression of neovascles after intravitreal anti-VEGF after few weeks.
So carotid surgery, carotid endarterectomy or stenting is done. Prognosis: up to 50% of patients who present with OIS will have vision at counting fingers or less within 1 year. Rubiosis iridis is a poor prognostic indicator. Visual acuity deteriorates to counting finger or worse in 80% of those with rubiosis at presentation or within 3 months. Neovascular glaucoma develops in 68% of patients with OIS. Treatment with PRP has a positive effect with regards to reduction of neovascular glaucoma. Overall mortality is 40% at 5 years. MI 67% is the leading cause of death. Second cause is cerebral infarction, 19%. It is therefore essential that physicians adopt appropriate therapeutic options aiming at prevention of MI and cerebral infarction. Take home message: OIS can not only have sight threatening ocular sequelae but can also have life threatening systemic implications. Carotid artery disease increases risk for stroke and cerebrovascular accidents. It is for this reason that eye care providers must be able to quickly recognize OIS signs and symptoms in order to initiate the proper workup and treatment. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Zair. Excellent presentation and the difficult topic, poorly understood. तो आपने जो है ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया है तो आधा क्रेडिट तो इसको इसका जाता है आपको कि इतना मुश्किल आपने वेंचर जो है ना वो शुरू किया तो अच्छा तो फिर भी आपने इतना अच्छा कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने मतलब बड़ी मुश्किल से ये समझ आई थी ऑकुलर इस्केमिक सिंड्रोम, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर नहीं होता, तो इसलिए एक चीज़ मैं थोड़ी सी इसमें इम्प्रूव करना चाहूँगा। वो पहली स्लाइड जो है ना वो देखें, हर दफ़ा मैं कहता हूँ कौन सी अच्छी चीज़ें और कौन सी। ही वॉज इंटरेक्टिव, पहला SLO था, आखिरी टेक होम मैसेज था, एक्सीलेंट। ये सारी चीज़ें मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो पहली SLO है उसमें हम कैसे शुरू करते हैं, क्या सेंटेंस यूज करते हैं? Okay, so by the end of this presentation the audience or participants will be able to, इसमें क्या अंडरस्टैंड और नॉलेज का लफ्ज यूज नहीं करते हैं हम ये कहते हैं पहले ऊपर वाली सेंटेंस वो लाजमी आपने लिखनी है, नीचे एक्शन वर्ब से शुरू करना है। विल एनलिस्ट, विल डिस्क्राइब, विल मेक आउट, जो करके दिखाएंगे और आपको पता चलेगा। ऐसा लोग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बाकी फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। उसमें जो मेजरेबल होते हैं बेसिकली वो देखते हैं कि जो आप मेजर कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग से ना मेजर बेसिकली क्या करना है, ठीक है, और इसमें इस तरह से लिस्ट है। दूसरा ये कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट कॉमन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, यू विल नॉट सी सच अ केस, वेरी रेयर, मे बी सम पिक्चर और समथिंग लाइक दैट। इट इज कम्स इन डिफरेंशियल डायग्राम्स। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लाइक डायबिटीज, CR0, DRVO, इन सब में जो है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट इस तरह करना है किसी डिजीज से, दैट इज वो आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएटिंग किस तरह यू मेक अ टेबल जिसमें इंसिडेंस, एज, व्हाटएवर जो प्रेजेंटेशन है, तो थिंग्स लाइक दैट ये आपको रिमेंबर करना चाहिए। सो ऑक्यूलर इस्केमिक सिंड्रोम बोले जरूर, लेकिन उसको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के तौर पर इंशाल्लाह उसको लेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए सो दैट वी कैन डिस्कस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। जो आप एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, तो सम टाइम्स ये होता है कि आप सबसे पहले वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकालते हैं, उसमें प्रायोरिटी देखते हैं कि प्रायोरिटी किस डिजीज को पहले दी है, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप उसकी डिस्कशन करते हैं। समटाइम्स यू मेक योर डायग्नोसिस में भी रॉन्ग, लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं विद योर रीजनिंग, यू गेट आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इट इज योर जस्टिस। वो हम जो देख रहे होते हैं ये नहीं देख रहे होते कि हम ये देख रहे थे कि
जो कैंडिडेट है वो कितना सेफ है, कितना वो सेफ प्रैक्टिस कर सकता है, कितनी वो लॉजिकल है उसकी अप्रोच, और किस तरीके से वो पेशेंट को हैंडल कर पाएगा इंडिपेंडेंट। सही। सो देखें, ऑकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम का मतलब है कि पूरा आई बॉल का इस्कीमिया हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट। तो दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट दोनों की फाइंडिंग्स आएंगी। कॉजेज में द मोस्ट कॉमन कॉज एथरोस्क्लेरोसिस, मेन में ट्वाइस एज कॉमन एज वुमेन, और आमतौर पे 40-50 की एज पे आपको एथरोस्क्लेरोसिस के प्लाक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से कैरोटिड नैरोइंग हो जाती है। सो सबसे बेस्ट डॉपलर। डॉपलर में क्या आप डिटेक्ट करते हैं? ब्लड फ्लो कितना है, तो वो आपको मेजर कर देता है कि जी इतने परसेंट आर्टरी ओक्लूजन है, इतने परसेंट फ्लो हो रहा है। सो डॉपलर के अलावा और कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप बताएं? गुड। एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी, एमआरआई एंजियोग्राफी भी हो सकती है। सो वी वांट टू नो कि एनाटॉमिकली कितनी वो है। अच्छा, उसके बाद रेयर कॉजेज पे हम आए तो पल्सलेस डिजीज किसको कहते हैं? टाकायासु, ठीक है। सो जो वेस्कुलाइटिस किसी भी वजह से, जॉइंट सेल आर्टराइटिस है, उसमें भी ये आर्टरी ओक्लूजन के एलिमेंट आ जाते हैं। सो आई में जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है स्क्विंट सर्जरी, रिसेक्शन ऑफ मोर देन 2 मसल्स रेक्टाई। अगर हम देखें तो सिवाय एक लेटरल रेक्टस है जहां से एक आर्टरी आ रही होती है एंटीरियर सिलियर, बाकी दोनों तीनों मसल्स जो हैं वहां से 2 आर्टरीज आ रही होती हैं। सो अगर आप मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और स्पीड रेक्टस तीनों का इकट्ठे ऑपरेशन करेंगे तो देयर इज डेंजर ऑफ ऑकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम। सो 2 रेक्टाई से ज्यादा एक वक्त में नहीं करते, स्पेशली इन ओल्ड एज या मिडिल एज। उसमें पहले ही कॉम्प्रोमाइज होती है, बच्चा शायद फिर भी गुजारा कर दे, बड़ों में नहीं हो सकता। सो उसका हल क्या निकालते हैं? या तो हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, जैसे नैप प्रोसीजर है, रिवर्स नैप है, जेंसन प्रोसीजर है, बजाय मीडियल लेटरल और एक तीसरा मसल छेड़ने के हम मसल्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। या अगर आपने 3 मसल करने ही हैं तो पहले आप 2 मसल कर लें और उसके बाद 3-4 महीने 6 महीने के बाद फिर तीसरा मसल करें, उतनी देर में कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं। सो यंग पेशेंट्स, चिल्ड्रन में आप ये स्टेज सर्जरी कर सकते हैं, बट एडल्ट्स में और ओल्ड एज में तो अवॉइड ही करें, 2 मसल से ज़्यादा ना करें इस्कीमिक सिंड्रोम हो। सो जो फीचर्स हैं वो हैं इस्कीमिया के। अब इस्कीमिया के फीचर्स कॉर्निया पे तो आ गया, क्या फाइंडिंग आएगी कॉर्निया पे? कॉर्नियल एडीमा है। और ये जो आइरस पे रूबियोसिस हो गया, एंटीरियर चैम्बर में सेल हो गए, पीछे रेटिना पे आपको इस्कीमिया से क्या मिलेगा? डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज। सो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस इस ऑकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम में यूनिलैटरल होंगे। इसी तरह सीआरवीओ में भी यूनिलैटरल, तो डायबिटीज में बाइलैटरल। तो अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है और पिक्चर आपको डायबिटिक वाली लग रही है तो आप कंसिडर करते हैं ऑकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम। तो वो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जी फिलिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो नॉर्मल 30 है तो वो 60 तक चले जाता है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये CRVO, BRVO, ये सारों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? एंड आर्टरेक्टमी, या आप स्टीनोसिस में स्टेंट डालते हैं या आप उसको बाईपास करते हैं। सो करना वेस्कुलर सर्जन ने है, लेकिन ये है कि हमने रेफर करना है क्योंकि स्ट्रोक भी हो सकता है और MI भी हो सकता है। सो सिस्टेमिक डिजीज है। तो वेल डन। एनी क्वेश्चन? जितने भी ये वॉस्कुलर डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
ये ऑप्थेल्मोलॉजी की डोमेन से थोड़ा बात हो